Doctor's World, written by R K Narayan, introducing the author Rashipuram Krishnaswamy Layar Narayana Swamy, 1906 to 2001, is an Indian English novelist and a short story writer. His narrative highlights social context and provide a feel for his characters through everyday's life. So, his short stories is based on the everyday's character. He has brought out the humor and energy of ordinary life and displayed the compassion, humanism in his fiction. He had created a fictional town called Malgudi that stood for reality. In this above paragraph, it is said that doctor's skill as well as his powers in his words is equally important. गोटे डॉक्टर जेते स्किलफुल होइथिबो सेते भलो आउ तार वर्ड्स जेते परफेक्ट होइथिबो से गोटे पेशेंट को आहुरी जल्दी हील करि परिबो. इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज गोटे पेशेंट को जदि डिजीज होइछि से वर्षक भितरे ठीक हो जिवो एंड इट इज अ सीवियर डिजीज. डॉक्टर जदि तांको फैमिली मेंबर्स के से पेशेंट को कहबा इट इज अ सीवियर डिजीज एंड बहुत कम चांस अछि वर्षक भितर ठीक हवा पई से हुए तो बहुत जल्दी हील न हो पारे. बट इफ द डॉक्टर विल कन्विंस हिम दैट नो द डिजीज इज वेरी नॉर्मल एंड यू कैन हील विद इन 6 months, सो से पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो. सो आमे कौन जानिया पाऊँ कि डॉक्टर वर्ड बहुत पावरफुल गोटे पेशेंट रो लाइफ पाई. पीपल कम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स. डॉक्टर रमन ऑफन ब्रस्ट आउट, why couldn't you have come a day earlier? The reason was obvious: visiting fee 25 rupees, and more than that, people like to shrink the fact that the time had come to call Dr. Raman. For them, there was something in the very occasion. As a result, when the big man came on the sense, it was always a quick decision one way or other. So, लोक मैंने डॉक्टर रमन कतिकी पूरा पेशेंट को लास्ट स्टेज रे थिबो पेशेंट सेते बळे ही नहीं कि जानती. ऑब्वियसली तार दीटा रीजन थिला. फर्स्ट रीजन कौन ना विजिटिंग फी बहुत ही अधिक थिला डॉक्टर रमन कर. दैट वाज 25 रुपीज एट दैट टाइम. तो सेटा बहुत हाई अमाउंट थिला एट दैट टाइम. सेटा बहुत हाई अमाउंट थिला. तो पेशेंट माने इग्नोर करुथिले एंड जेतेबेले लास्ट स्टेज ही जाउथिला सी दौड़ुले डॉक्टर रमन को पाखु एंड पीपल माने स्टिक करथिले कि हाँ लास्ट स्टेज आसु अधिक सीरियस हो जाऊ ताहले जाइंकी डॉक्टर रमन को देखा करिवे. सो दिस वेर द टू रीजन्स जो कि से माने डॉक्टर रमन को पाखु को प्रिफर करुथिले. वाज नो स्कोप और टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ waving or whitewashing. Long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain curt truthfulness. So कौन ही थिला जेहेतु लोक मैंने सबू लास्ट दीटा स्टेज रे ही आसुले आइदर द पेशेंट बहुत सीरियस हेतबो नहले से विजिटिंग फी पे डिले करुथिबे. तो ए दीटा स्टेज पे जेहेतु आसुले आउ डॉक्टर रमन कर एते एक्सपीरियंस हो जाइथिला पेशेंट मान को हैंडल करी करी कि सी किसी टाइप ऑफ व्हाइट वॉशिंग करू नथिले माने किसी टाइप ऑफ मिछ कथा कहू नथिले कि नाई जदियो गोटे पेशेंट 15 दिन रे मरिबो से कहउथिले 15 दिन रे मरिबो कि प्रेडिक्ट कर दउथिले हाउ मच लॉन्ग ही और शी वुड सर्वाइव. सो एटा तांकर लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस पाई पॉसिबल होतला और से किसी टाइप ऑफ व्हाइट वॉशिंग करू नथिले काहेकि ना से बिलीव करथिले मु जदि व्हाइट वॉशिंग करिवि आज नहले काली नेचर तांको आपे आपे कहि दबो कि से मरिया पे जाउछंती कि तांको हेल्थ बहुत खराब अछि. तो से सब बेले सत कथा ही कहउथिले. फॉर दैट्स व्हाई दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वाज वैल्यू. तो सब बेले सत मीन्स ट्रू ओपिनियन दबा ही तांको कथा को सब लोक मैंने वैल्यू करथिले. से जो कथा कहउथिले जहाँ एडवाइस दउथिले जेंती कोर्ट रे वर्डिक्ट दिया जाए ऑर्डर दिया जाए कि हाँ एटा हबो बेली कि तांको कथा को भी समस्त ऑर्डर भलिया मानुथिले. ही वाज नॉट अ मियर डॉक्टर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. से गोटे डॉक्टर भलिया ओपिनियन दो नथिले बट अ जज प्रोनाउंसिंग अ वर्डिक्ट. से गोटे जज भलिया निज वर्डिक्ट दउथिले. द पेशेंट लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड. तो पेशेंट रो लाइफटा तांको वर्ड्स ऊपर से जो अनुसार कहउथिले से तांको वर्ड्स ऊपर निर्भर करूथिला पेशेंट रो लाइफ.
never unduly worried Dr. Raman. He never believed that the agreeable words ever saved lives. He did not think it was any of his business to provide unnecessary dope when, as a matter of course, nature would tell them the truth in few hours. However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeves and stepped into the arena. It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yama's hand. तो कौन होतला से बिल्कुल ही वरिड नथले ए विषय ପାଇଁ कि डॉक्टर रमन से केबे हेले भी बिलीव करू नथिले कि गोटे डॉक्टर रो वर्ड गोटे पेशेंट रो लाइफ को सेव भी करि पारे. He did not think it was his business. तो से भाबु नथले कि सेटा तांकर गोटे बिजनेस बेली पेशेंट को सूदिंग वर्ड्स कहि कि तांको लाइफ को सेव करवा. कहीं ना सी भावुले कि नेचर तांको ऑलरेडी ही इंडिकेशंस दे कि जणे माने जणे दब आउ किछि मोमेंट पर कि सी डेथ रो नियर ही साइलेनी बेली कि. हाउएवर इन सम ग्लिम्स सो सी जितेबाला ऑपरेशन थिएटर को जानती कि अरेना को जानती तो सी डे आवर्स बीती जाऊ कि पूरा दिन लगी जाऊ सी तांकर फुल चेष्टा करती कि सी केमिति यमर हाथरू से पेशेंट को बंचाई देबे. माने सी निजर फुल चेष्टा करती से पेशेंट को बंचाई. ऑफ अ पर्सन डियर टू योर हार्ट अपसेट्स यू. कैन यू गेस हाउ डॉक्टर फील्स फॉर हिज एलिंग फ्रेंड. तो कौन जो पर्सन तुमको निजर बहुत तुमर निजर सी जिते सिक हुए तमें अपसेट हो जाओ कि कौन तुम केबे जानिच कि डॉक्टर को केबे फील हुए जदियो निजर किए बहुत भल सांग इल हो जाए और बेड रिडन हो जाए. टुडे स्टैंडिंग ओवर बेड द डॉक्टर फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ नीड समवन टू टेल हिम सूदिंग लाइज. तो आज डॉक्टर निजे जितेबाला जन बेड साइड रे ठिया होते निजे फील है कि जड़े दरकार जे किसी सूदिंग मिछ कथा कहीपर जमी माइंडटा डाइवर्ट हो जाओ. ही मूव्ड हिज ब्रोज विथ हिज कर्चिप एंड सैट डाउन इन द चेयर बिसाइड द बेड. सी निज हैंकरचिप रे निजर आईब्रोज पाखे पोछिले आ चेयर रे बसीगले से बेड साइड रे. On the bed lie his dearest friend in the world. Known each other for 40 years now. Starting from the kindergarten days, they could not, of course, meet for as much as they want, each being wrapped in their own family and profession. So, Gopal और Dr. Raman, दी जन kindergarten बेलू सांग. They were friends above 40 years now. So, they of course they cannot meet as much as they can. माने सी एते भल सांग थिले कि सी 40 वर्ष हेलाणी सांग रही आछंती आउ सी तांको किंडरगार्टन बेलू माने छोटो नर्सरी किड बेलू से मन दी जण सांग थिले. सो ऑफ कोर्स से माने एते मिसामिसी करि पारंतिनी एते गपसप हेई पारंतिनी एज दे बोथ आर रैप्ड इन देयर ओन फैमिलीज. से मान निज निजर फैमिली अच्छी एंड दे हैव देयर ओन प्रोफेशन. बट ऑकेजनली ऑन संडे रे केतबेले केंती Gopal would walk into the consulting room and wait patiently in a corner till the doctor was free. And then they would dine together, see a picture, and talk of each other's life and activities. It was a classic friendship standing over, untouched by changing times, circumstances, and activities. So, कौन गोपाल को टाइम मिलले केतबेले केंती वीकेंड संडे रे से कंसल्टिंग रूम को जाती डॉक्टर कर आ सेठी पेशेंटफुली वेट करती डॉक्टर फ्री हवा जाके. तापरे से माने निजे डिनर करती एका संगे मिसिकी पिक्चर देखती और निज निज एक्टिविटी विषय रे गपंती. सो गोटे क्लासिक फ्रेंडशिप सेटअप हो जाइतला दी जनक भितर इरेस्पेक्टिव ऑफ changing time, circumstances, and activities. Every round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called him over 3 months now. तो डॉक्टर रमन निज काम एत व्यस्त हो जाइए जे सी माने नोटिस ही करनथिले कि गोपाल तांको 3 मास है भेट ही नांती. ही जस्ट रिमेंबर दैट इट when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. Dr. Raman could not talk him for over an hour. When he got up and was about to pass on to the operation room, he called up the young man and asked, "What brings you here, sir?" The young man was nervous and shy. "Mother sent me here." "What can I do for you?"
तापरे से यंग मैन कहले फादर इज इल। तो कौन होता ना गोटे क्राउडेड मॉर्निंग रे जिते डॉक्टर रमन गोपाल को पुओ को कंसल्टिंग रूम पाखे बसबार देखी तो सी तांकर हठात गोपाल को कथा मन पड़ जाइए सी गोटे घंटा जाके कथा हाँपाई टाइम हैलानी बट से गोटे घंटा पर टाइम बाहर करिकी से यंग मैन पाखक आसते और पचारे तमें ये कहीं आस आउ कौन आस तो सी कही कि मामा पठे सी रिजन पचारा बेलू डॉक्टर रमन से कहले बापा को देह खराब। स्किलफुल डॉक्टर्स आर ऑलवेज काम even in adverse situation. How do you think Dr. Raman would have reacted when he saw his friend? तो आम समस्ते जानीचु कि स्किलफुल डॉक्टर्स जो मैंने अच्छे से माने इवन इफ गोटे हार्ड एडवर्स सिचुएशन रे भी काम रिएक्शन दियंती बट कौन डॉक्टर रमन निज फ्रेंड कर ए अवस्था देखी काम रिएक्शन देथिले। लेट अस स्टडी। It was an operation day and he was not free till 3 in the afternoon. He rushed off straight from the clinic to the French house in Lawley Extension. Gopal lay in the bed as if in sleep. The doctor stood over him and asked Gopal's wife, how long had he been in the bed? So, कौन हेइतला से दिन गोटे बहुत बिजी दिन थिला डॉक्टर रमन को पई आउ सीए खराबेल 3टा जाके पूरा बिजी शेड्यूल रे पैक होगी थिले। देन से स्ट्रेट क्लिनिक रु लॉले एक्सटेंशन जाइथिले जोटा तांको सांगों को घर थिला। सेठी जाइंकी देखिले तांको सांगो बेड रे पड़ी छंती एज इफ ही वाज स्लीपिंग। तापरे से तांको फ्रेंड रो वाइफ को पचारले कि केते मास धरी कि से बेड रे पड़ी रही छंती। तो तांको वाइफ रिप्लाई कले अ मंथ एंड अ हाफ डॉक्टर। Then the doctor asked, who is attending him? A doctor in the next street. He comes down once in 3 days and gives him medicine. तो कौन तांको वाइफ कौन कहले सी गोटे मास आउ गोटे मास अधा बेड रे पड़े आउ जड़े डॉक्टर जे नेक्स्ट स्ट्रीट रे रोचंती तांको आसी ट्रीटमेंट करूछंती। सी 3 दिन को थरे आसिकी मेडिसिन देकी जाउछंती। Then Dr. Raman asked, what is his name? He had never heard of him. Sometimes I don't know, but I wish he had the goodness to tell me about it. तो टापर डॉक्टर रमन कहले why couldn't you have sent me words earlier? तो डॉक्टर रमन कहले कहीं तुम मैंने मते आगुरु ए विषय रे कहि नथिलो। Then Gopal's wife says, we thought that you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily. Then they were apologetic and miserable. So गोपाल कर वाइफ एपोलोजाइज करी कहले आम मैंने भाविलु कि आपण बहुत बिजी थिबे आपण को लाइफ रे तो आमे आपण को अननेसेसरीली किछि ट्रबल दबा पे हार्डली एनी टाइम टू बी लॉस्ट। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ओपन हिज बैग। He took out an injection tube. The needle sizzled over the stove. तो the needle sizzled over the stove माने तो सबू needle को इंजेक्शन दबा आगु स्टेरिलाइज करिया पे पड़े तो से पानी गोटे कटोरी रे नहीं कि ताकू से needle को स्टेरिलाइज करूथिले माने पानी रे गरम करूथिले। The sick man's wife whimpered माने uttering a weird sound माने किसी गोटे पार्टरू बाहर करके क्वेश्चन पचारिया पे चाहूले एंड एसेड टू आस्क क्वेश्चन। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन स्नैप द डॉक्टर। सेतिकी क्वेश्चन पचारला बेलू गोपाल वाइफ डॉक्टर कौन कहले डॉक्टर कहले प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन हु वे वाचिंग द स्टेरिलाइजर एंड सेड सेंड देम ऑल अवे समवेयर एक्सेप्ट द एल्डेस्ट। बड़टा को छाड़ी आउ समस्त को आउ कोठी पठे दियो। ड्रग sat back in the chair and gazed on the patient's face for over an hour. The patient still remained motionless. The doctor's face gleamed with perception and his eyelids dropped with fatigue. The sick man's wife stood in a corner and watched silently. She asked timidly, Doctor, shall I make some coffee for you? तो यही पैराग्राफ रे कौन है ना डॉक्टर इंजेक्शन ट्यूब रे ड्रग इनसर्ट करिकी इंजेक्ट कले से पेशेंट को माने तांको सांगो को तापरे से पाखर चेयर रे बसिकी पेशेंट रो मुह को कंटिन्यूअसली अनौथिले। सो द पेशेंट वाज मोशनलेस। पेशेंट किछि मोशन देखौ नथला। सो द डॉक्टर वाज स्वेटिंग एंड हिज आईलिड्स वर सो टायर्ड
से पूरा आईलिड गुरा फैटिक हो जाइतला आउ बंद कला बेले जो पोड़े से अवस्था हो जाइतला आखिर. The sick man's wife stood in a corner and was watching this silently. So से timidly माने गोटे confused voice रे पचारला कौन आपण कॉफी नेबे कि? No, he replied. Although he felt famished, although Dr. Raman hungry थिले, then also से कॉफी पाई मना कर देले. Having missed his midday meal, he got up and said, से तांको मिड डे मील को स्किप कर देथिले. देन ऑल्सो से उठी कहले, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनिट्स, डोंट डिस्टर्ब हिम ऑन एनी अकाउंट. ही पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट टू हिज कार. तो से कौन कहले ताको किसी भी रीजन पर डाकिबनी, मु फ्यू मिनिट्स रे आसुची. इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर ही वाज बैक. सो डॉक्टर रमन 15 मिनिट पर पुणी फेरी आसथिले, फॉलोड बाय एन असिस्टेंट एंड अ नर्स. से गोटे असिस्टेंट को आ गोटे नर्स को तांको सांगरे नेकी आसीथिले. The doctor told the lady of the house, I have to perform an operation. Why? She asked faintly. से पूरा मैंने कन्फ्यूज है कि बेहोश होला भलिया वाई पचारुले गोपाल को वाइफ. कहीं डॉक्टर कहले कि तांको गोटे ऑपरेशन परफॉर्म करिवार अछि. I will tell you all that soon. Will you leave your son to help us and go over the next house and stay there till I call you? तो सी तांको वाइफ को कहले कि तमे तम सन को ये छाड़ देकी जाओ आम हेल्प करने आउ तमे नेक्स्ट रूम को जाइंकी अपेक्षा करथाओ आमे कहले तमे आसीबो. द लेडी फेल्ट गिडी. तो से कौन गोटे डेजी आउ फेंट मैंने बेहोश होला भलिया फील कले, जमी फ्लोर रे पड़गला भलिया. अनेबल टू बियर द स्ट्रेन. से एते वीक हार्टेड हो जाइतले कि से स्ट्रेन को बियर ही करि पार नथले. द नर्स अटेंडेड टू हर एंड लेट हर आउट. तो नर्स जो आसी पेशेंट को हेल्प करने से तांको वाइफ को हेल्प करके नहीं कि नेक्स्ट रूम रे छाड़ले. सो डू डॉक्टर्स लेट द नियर रिलेटिव्स नो अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन. सो डॉक्टर रमन कौन तांको घर मेंबर्स को से पेशेंट रो सीरियस कंडीशन विषय कही देथिले. डॉक्टर रमन वॉज फ्रैंक. डॉक्टर रमन फ्रैंक अछंती, से स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूथिले. What does he do in this case? In his bosom friend. So सी निजर चाइल्डहुड फ्रेंड से निज क्लोज हार्टेड फ्रेंड पाई कि कौन सेम करथिले. So next paragraph रे हमें जानिए. All about the 8 in the evening, the patient opened his eyes and stared slightly in bed. The assistant was overjoyed. He exclaimed enthusiastically, Sir, he will pull through. The doctor looked at him coldly and whispered, I would give anything to see him through. But the heart? The pulse has improved, sir. Well, replied the doctor, don't trust it. It is only a false flash-up, very common in this case. तो कौन होइथिला से ए पैराग्राफ रे जेतबेले संध्या 8टा बाजिगला पेशेंट तार आखि खोलदेला. जस्ट आखि टिके खोलची तो असिस्टेंट बहुत ओवरजॉय है कि कहला, सर पेशेंट आखि खोलदेलानी तो ये ठीक हो जिवो. सो डॉक्टर कौन कहले माने कोल्डली माने कौन सी जमी आगुरी एक कथा जानते कि असिस्टेंट या कहबो बोली ताको कोल्डली कह जाए. कोल्डली विस्पर कले कौन सब ठीक अच्छी हेले तांको हार्ट. तो असिस्टेंट आउ थे कहले द पल्स हैज इम्प्रूव्ड डॉक्टर. तापर डॉक्टर कहते डोंट ट्रस्ट द पल्स, इट इज जस्ट अ फॉल्स रे ऑफ होप. एटा को सत भावनी, एटा जस्ट गोटे फॉल्स रे ऑफ होप. सो एटा बहुत कॉमन ए केस रे. ही रियूमिनेटेड माने कौन माने टिके समय चिंता कले तापर पुणी कहले ही रियूमिनेटेड फॉर अ वाइल एंड एडेड, इफ द पल्स विल कीप till 8 in the morning, it will go for next 40 years, but I doubt very much if we shall see anything of it at all after tonight. तो राति पर जदि किछि हे गला डॉक्टर बहुत चिंता रे थिले. He sent away the assistant and sat beside the patient. तो से assistant को पठाई दे निजे patient पाखरे बसले. At about 11 the patient opened his eyes and smiled at his friend. तो 11टा बेले पेशेंट आखि खोलिकी निज फ्रेंड को अनेकी स्माइल करथिले. He showed a slight improvement. He was able to take in a little food. A great feeling of relief and joy went throughout the household. They swarmed around the doctor and poured out of their gratitude. He sat in his bedside beside the
bed, gazing sternly at the patient's face, hardly showing any signs of hearing what they were saying to him. तो डॉक्टर रमन न किछि न सुनला भलिया हेइकी निज सांग मुह को कंटिन्यूअसली अनैकी रहुथिले. The sick man's wife asked, "Is he now out of danger?" Without turning his head, the doctor said, "Give glucose and brandy every 40 minutes, just a couple of spoon with two." तो तांको कौन कहला डॉक्टर कौन एडवाइस देले ग्लूकोज और ब्रांडी को कपल ऑफ स्पून माने 2 स्पून नेखा तांको एवरी 40 मिनिट्स दबा पई कहिथिले. द लेडी वेंट अवे टू द किचन. तो से लेडी माने गोपाल को स्त्री किचन को जाइकी शी वाज रेस्टलेस तांको रेस्टलेस लागुथिला. शी फेल्ट दैट शी शुड नो द ट्रूथ व्हाटएवर इट माइट बी. why the great man is so evasive माने से सत को नुचेई की कहीं एमती कहउछन माने कहीं गोटे डायरेक्ट माने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर न दे कि उल्टा सीधा जवाब दौरान. द सस्पेंस वॉज अनबियरेबल. तो सस्पेंस कौन बहुत असहनीय थिला. परहैप्स ही कुड नॉट स्पीक सो नियर द पेशेंट्स बेड. सो डॉक्टर रमन भी पेशेंट बेड पाखरे एते सब कथा गपी पार न थांते. शी बिकॉन्ड टू हिम फ्रॉम द किचन डोरवे. तो सी किचन डोरवे पाखरु तांको डाकी थिले कि डॉक्टर रमन को डाकी थिले. द डॉक्टर रोज एंड वेंट ओवर. शी आस्क्ड, "What about him? How is he?" The doctor bite his lips and replied. So doctor तांको ओठ चापी की रिप्लाई कले. कौन रिप्लाई कले? Look, don't get excited unless you must know about it. तो तमे किछि जानिबा पूर्वरु एक्साइटेड हुअनी. Don't ask now. तो अबिका मते किछि पचारनी. Her eyes opened wide in terrors. तांको आखि पूरा टेरर रे बहुत बड़ बड़ माने हे जाइथला. शी क्लास्प्ड हर हैंड टुगेदर एंड इम्प्लोर्ड. सो से निज हाथ को एकाठी करिकी तांको प्रे करथिले कहिया पई सत कथा. टेल मी द ट्रूथ. द डॉक्टर रिप्लाइड, आई वुड रादर नॉट टॉक टू यू नाउ. मु तम सहित अबिका कथा हेई परिबिनी. शी टर्न्ड राउंड एंड वेंट बैक टू हिज चेयर. अ टेरिबल विलिंग स्पॉट थ्रू द स्टिल हाउस. तो पूरा घर जाक गोटे साइलेंस हो गला. साइलेंस क्रिएट हो गला. द पेशेंट स्टेयर्ड एंड लुक अबाउट इन बेलविल्डरमेंट माने कन्फ्यूजन रे अने पे लगिला से पेशेंट ऑन माने आखि खोलिकी. द डॉक्टर गॉट अप अगेन when over the kitchen door, drew it in securely and stuff off. Does a doctor even let a patient know how serious his condition is? Wasn't Dr. Raman feared of his frankness? So कौन गोटे पेशेंट को डॉक्टर तार सीरियसनेस विषय जणई दब कि केबे? डॉक्टर रमन कौन निज फ्रैंकनेस उपरे अफ्रेड थिले कि से एते फ्रैंक अछंती बेली? What did he do in the case of his friend Gopal? Let us study. When the doctor resumed his seat, the patient asked in the faintest whisper possible. So सी जेतबेले पेशेंट रो साइड रे बसी थिले बेड रे. सो से पेशेंट फेंटेस्ट वॉइस माने जेते लो वॉइस पॉसिबल ता द्वारा से सेते लो वॉइस रे कहिला, "Is that someone crying?" The doctor advised, "Don't exert yourself. तमे निजो को चिंता रे पकाउनी. You mustn't talk." He felt the pulse. It was already agitated by the exertion. से तांको पल्स को फील करि पतले जी इरिटेट हो जाइथिला एक्सॉर्शन मिलिथिला बेली. The patient asked deprecating noise. Deprecating माने it was a non-approval noise and sat back in his chair. He had never faced such a situation like this. It was not in his nature to do whitewash. तो तांको नेचर नथिला जनଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା, जनଙ୍କୁ white wash କରିବା. People attached great values to his word because of that. The people तांको सेहिति पे great value तांको words को दियंती. He stole a look at the other. The patient motioned a finger to draw him near and whispered, "I must know how long I am going to last. I must sign the will. It is already. Ask my wife for the official box or the dispatch box." So dispatch box means the official box. "You must sign." Oh, the doctor exclaimed, "You are exerting yourself too much. You might be quieter." He felt idiotic while repeating it.
How fine it would be, he reflected, to drop the whole business and ran away somewhere without answering anybody's question. The patient clutched the doctor's wrist. The ଏଠି ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ନେଲେ, ରିଷ୍ଟକୁ ଧରି ନେଲେ in his weak fingers and said, Ramu, it is my good fortune that you are here. And at this movement, I can trust your words. I can't leave my property unsettled. That will make an endless mystery for my wife and children. You know all about Subeh and his gangs. So let me sign before it's too late. ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମରିଯିବା ଆଗରୁ ତୁ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ, ମୁଁ କେତେ ଡେରି ଯାକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୋ ୱାର୍ଡ଼ସକୁ ସତରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ ଥରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ସିଓର ହେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରିବାର ଥିବ ମୁଁ ଆଗେ ହିଁ ନିଜ ୱିଲ୍ ପେପର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପେପର ଥାଏ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବି, ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁକି ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହଇରାଣ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। Yes, presently, replied the doctor. He walked off his chair and sat in the back seat and reflected. He looked at his watch. Midnight. If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours or never. He could not be responsible for the mess there. He knew too well that the family affairs and about those wolves, Subeh and his gang. तो डॉक्टर रमन मने मने कौन चिंता करते से चिंता करते कि जदियो से बॉन्ड पेपर साइन हवा दरकार ताले नेक्स्ट 2 घंटा भितर साइन करदेबार थिला नहले जदियो से न करिवो ताले डॉक्टर रमन तांको फैमिली मैटर्स विषय भी भलो भाबरे जानी छंती बट हाउ इट इज पॉसिबल बट what could he do if he will ask him to sign that it would virtually mean a death sentence and destroy the 1,000 parts of chance that a patient had of survival. So सी जदि तांको सांगो कहि देबे हां तो विल पेपर रे साइन कर दे मरिबा आगुरु तो इट विल virtually mean माने इट विल इनडायरेक्टली मीन दैट से कहउचंती कि तू मरिया पई जाउछ और तू विल पेपर रे साइन कर देई कि जा तो स्त्री छुआंको पई बट ଆଉ ଏମିତି କହିକି ସିଏ 1000 ଚାନ୍ସ ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ पेशेंटर बंचिया पाइंकी सो सी एमती करने बिल्कुल भी चाहू नथिले इवन दो इट मीन्स व्हाइट वॉशिंग द पेशेंट सो ही गॉन डाउन फ्रॉम द कार एंड वेंट इन ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द चेयर द पेशेंट वॉज स्टेयरिंग एट हिम apparently the doctor said to him so the doctor तंग कहले if my words can save his life सो डॉक्टर निजो कहले कौन कहले जदि मो वर्ड्स ता लाइफ बंचाई पारिबो आई शैल नॉट लेट हिम डाई तो मु ताको मरिया पई देबिनी ही विल बी डैम्ड ही कॉल गोपाल लिसन दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू डू द पीस ऑफ एक्टिंग बिफोर अ पेशेंट स्टिमुलेट अ फीलिंग एंड कंसील हिज जजमेंट ही स्टॉप्ड ओवर द पेशेंट एंड सेड विथ डेलिबरेट एम्फासिस तो सी फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करिया पई जाउतले और से कौन कहले डोंट वरी अबाउट द विल नाउ यू आर गोइंग टू लिव योर हार्ट इज एब्सोल्युटली साउंड अ न्यू ग्लो सफर्स्ट द तो एटा सुनी कि गोटे नुआ ग्लो से पेशेंट को मुहरे आसीगला एज ही हर्ड इट ही आस्क्ड इन अ टोन ऑफ रिलीफ डू यू से सो कौन एटा तू कहूचु तो इफ इट कम्स फ्रॉम योर लिप्स इट मस्ट बी ट्रू जदि एटा तो मुहरु बाहरची ताले निश्चित एटा सत थिबो द डॉक्टर सेड क्वाइट राइट हाँ सत कथा यू आर इम्प्रूविंग एवरी सेकेंड तो प्रत्येक सेकेंड रे तो हार्ट रेट पल्स इम्प्रूव करची स्लीप इन अ पीस यू मस्ट नॉट एक्सर्ट योरसेल्फ ऑन एनी अकाउंट तो किछि भी जिनस रे किछि भी रीजन पाई निजको व्यस्त करनी यू मस्ट स्लीप वेरी साउंडली इट विल I will see you in the morning. The patient looked at him gratefully for a moment and then closed his eyes. The doctor picked up his bag and went out, shutting the door softly behind him. तो से डॉक्टर कौन कले रूम टाको सॉफ्टली बंद करिकी डोर टाको पळेले पेशेंट्स लाइफ हैंग ऑन अ डॉक्टर्स वर्ड was it true in case of Dr. Raman how did he realize the truth of his word this is a divinely that shapes our end so कौन हला तो कौन गोटे पेशेंट रो लाइफ टा निर्भर करछि गोटे डॉक्टर रो वर्ड उपरे
ଏଇଟା କ'ଣ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କ କେସ୍ରେ ସତ ହେଲା କି? What do you realize from this word? On his way home, he stopped for a movement at the hospital, called out his assistant, and said, "The Lawley extension case. You might expect the collapse any second now. Go there with a tube in hand and give. In the case of struggle is too hard at the end. Hurry up." सो डॉक्टर कौन कहले सी जो निज घर को जाते क्लिनिक रे से हॉस्पिटल रे अटकिले आउ असिस्टेंट को डाकिले कि लॉले एक्सटेंशन रो केस को जाओ आउ निज हाथ में गोटे ट्यूब नहीं कि जाओ अबिका से कोलैप्स एनी मोमेंट रे ही पारे एनी सेकेंड रे ही पारे कोलैप्सटा सो यू गेट अ ट्यूब इन योर हैंड एंड गो देयर आउ अधिक स्ट्रगल है तुम से ट्यूब को इंसर्ट करे दो हार्ट रे. So he was back at Lawley extension at 10. So से डॉक्टर 10टा बेले Lawley extension को गले से कार रूपरा rush है कि गले for the sick bed. So from his car he made a dash for the sick bed. The patient was awake and looked very well. The assistant reported satisfactory pulse. The doctor put his tube at his heart, listened for a while, and told the sick man's wife, "Don't look so unhappy, lady. Your husband will live to be 90. When they were going back to the hospital, the assistant sitting beside him in the car asked, "Is he going to live, sir?" So, assistant तांको कौन पचारा डॉक्टर रमन को से कौन 70-90 जाके रहिबे? "I will bet on it. He will live to be 90. So डॉक्टर रमन कौन कहले मु आ ऊपर बेट लगे पारिबे से पूरा 90 जाके बंचिबे. He was turned the cover. तो सी कवर को टर्न कर देले. How he has survived this attack? से केंती अटैक को सर्वाइव कले? It will be a puzzle for me all my life, replied the doctor. एटा गोटे पजल हे कि रहइबो मो पई कि मो लाइफ जाक.